दोस्तों, ऋषि सुनैक जो कि अभी अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, उनके लिए ये समय मुश्किलों का है। क्यों? क्योंकि ये वो समय है जब पूरा का पूरा ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम रिसेशन की मार झेल रहा है और वहां पर बेरोजगारी और गरीबी बहुत तेज गति से बढ़ रही है। Mr. Speaker, there's only one party that's crashed the economy and they're sitting there. And I noticed this, Mr. Speaker. I noticed this. He won't say why Britain is set to be the first into a recession and the last out. So I will. 12 years of Tory failure, followed by 12 weeks of Tory chaos. For a decade, they've let our economy drift aimlessly before suddenly cutting the parachute ropes and slamming it to the ground. And because of the changes he's made, a typical household will end up with tax increases of £1,400. They don't want to hear about these tax increases of £1,400. Contrast that to a super wealthy non-dom living here but holding their income overseas. Well, Mr. Speaker, Labour had 13 years to address this issue and did nothing. Nothing. It was the Conservative government that took action and tightened the rules. But the problem with his idea is that it would end up costing Britain money. Not my words, the words of the former Labour Shadow Chancellor. He's not asked non-doms to pay a penny more. Every year, he talks about the money. Every year, that's £3.6 billion thrown away because he won't make them pay their taxes here. How many extra doctors could Britain afford with that money? Well, Mr. Speaker, I'm pleased that he brought up doctors because last week we delivered record increases in funding for the NHS. Not just more doctors, but more nurses, more scans, more operations. That shows our commitment to prioritise the NHS. Not my words, the words of the NHS Chief Executive. Mr. Speaker, every time he opens his mouth, another powerful business voice says he hasn't got a plan on growth. The failure of the last 12 years and the chaos of the last 12 weeks are compounded by the decisions he's taking now. He won't follow Labour's plan to scrap non-dom status. Instead, we've got an NHS staffing crisis. He won't follow Labour's plan to make oil and gas giants pay their fair share. Instead, he hammers working people. And he won't push through planning reform. Instead, he kills off the dream of home ownership. Too weak to take on his party, too weak to take on vested interest. 12 long years of Tory government, 5 prime ministers, 7 chancellors. Why do they always clobber working people? ऐसे समय पर ऋषि सुनैक की पार्टी की जो पॉलिसीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वो मेक या ब्रेक का काम कर सकती हैं। यहां तक कि सुनने में आ रहा है कि ऋषि सुनैक की पॉलिसीज, जैसे उन्होंने जो टैक्स बढ़ा दिया है वहां पर, और जो नए घर बनाने के लिए वो जो योजनाएं बना रहे हैं उसके लिए उनको बहुत पैसे की आवश्यकता चाहिए, जिसका कि वहां के लोगों को बिल्कुल भी उसका फेवर वो नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, वहां के लोग ये नहीं चाहते कि वहां पर और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर या और ज्यादा कंस्ट्रक्शन का काम हो। इसीलिए ऋषि सुनैक और उसकी पार्टी के लोग बहुत ज्यादा विरोध झेल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ऋषि सुनैक किस तरीके से आगे बढ़ पाते हैं। दोस्तों, भारतीयों के लिए या इंडियंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऋषि सुनैक उस देश में, ब्रिटेन में या यूनाइटेड किंगडम में बहुत लंबे समय तक काम करें, क्योंकि एक ऐसा देश जिसने भारत को 190 सालों तक रूल किया, वहां पर एक भारतीय मूल का प्रधानमंत्री बैठ करके उस देश को रूल करने का काम कर रहा है। दोस्तों, भारतीयों के लिए ये बहुत ही गर्व की बात होती है अगर कोई भारतीय किसी कंपनी में या किसी कंट्री में एक मुख्य पद पर चुना जाता है। पिचाई जैसे सत्या नडेला और जैसे बहुत सारे लोग हैं भारतीय, उनको बहुत ज्यादा गर्व की दृष्टि से देखते हैं। उनको बहुत खुशी होती है जबकि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है। दोस्तों, पुराने वीडियो में मैंने शेयर किया था कि भारतीय मूल के और ऐसे कौन से 2 या 3 प्राइम मिनिस्टर हैं जो अलग अलग कंट्रीज में काम कर रहे हैं, जो वहां पर मुख्य पद के ऊपर आसीन है और वहां की पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रहे हैं। तो दोस्तों, देखना यह होगा कि ऋषि सुनैक अपनी पॉलिसीज को लेकर के कितने सक्सेसफुल हो पाते हैं। कामना करते हैं कि ऋषि सुनैक का टेन्योर लंबा होगा, ना कि बोरिस जॉनसन की तरह जो कि बहुत जल्दी आए और चले गए। तो हमारी शुभकामनाएं ऋषि सुनैक के साथ में हैं।
और देखते हैं कि ये टेन्योर कितना आगे बढ़ता है। क्या ऋषि सुनक को इसके बाद में हो सकता है कि उनको इस्तीफा देना पड़े या रिजाइन करना पड़े अपने पद से। देखते हैं दोस्तों ये कैसे होता है। देखते रहिए